is a business model? So I came across this very good article by Harvard's Business Review, which is title what is business model, and there are so many definitions, different definitions of business models are discussed. I'm going to share it with you, but if I have to tell you in very simple words, it is just a company's plan to make money. How are you going to make money? Because any business, you'll start it with the intention of making profit, of course, right? So how are you going to make profit? This plan, you have to think about different aspects of your business and support it with facts and figures. And when you compile it, everything in systematic way, what you have is your business plan or your business model. So when somebody talks about business plan or business model, it's basically a document, one-page executive summary of your business model. So why do you require it? Is if you're going to ask for funding to someone, you should have this thing ready with you, because it shows that you have done thorough research about all aspects of the business. You have your facts and figures ready. You have talked to your customers, you have talked to your partners, and you have basically done your homework correctly. So it is shown, it is proved by this business model. Okay. Another thing I would like you to know about is, it's not that once you start a business and you have your business model ready throughout your company, that business model will never change. The business models do evolve, and they have to evolve over the years. And I'm not talking only about the small startups, campus startups, or small companies or something like that. This is true even for the giants. Even for the giants, take example of Apple. How Apple has evolved. What was the initial product? Macintosh, a personal computer. Then they started selling what? They started selling mobile phones. They started selling iPods. Before that, rather, they started selling iPods. They went into the music company. They went into the music business, digital music business. They came up with iTunes. Then they went to smartphones, right? So what is this? This is nothing but an evolution. This is what innovation is. Think about Cadbury's. I gave this example in some of my lab. What's Cadbury about? It's about chocolate. So what was chocolate? A few years ago, few decades ago, chocolate means people used to relate it with kids. Chocolate is for kids. Only kids eat it, and kids only enjoy it. But then slowly the Cadbury shifted their focus from kid-centric to adult-centric. And now what they have their ads, Cadbury Dairy Milk ads. You remember certain ads, there are no kids altogether. There are just grown-ups. So what they are trying to do, they change their focus from kids. They change their market actually from the kids to the adults. Anyone can have chocolates. Why this has happened? Why do you think? Are they rigid? No. This is the chocolate. It's kid only for kids only product. We will not change. They would perish. That kind of attitude. So don't think that when I saying just a business model means one document or one plan or something like that, it doesn't mean that it is fixed. It is sacred. It is not to be touched afterwards. It will evolve over the years. This is just your beginning. When you are launching your company, what it would be initially look like. Once you are stabilized or you gain some traction, you will have to evolve your business model, right? I hope I'm making this clear. Now we'll come to this business model patterns. Before I tell you what are the building blocks of business model, and before you become ready to make your own business model or business plan, I will show you how to identify different patterns which already exist in market. Okay. So there are these different types of business models are already existing. I'll give you some examples also. First is unbundling business models. Unbundling means taking out separate parts of a business together. And I mean, it's the same company, it's the same product, but you are identifying three different things and treat it like a different business altogether. It is still under one business, it is still under one roof, it is still under one product. That is what is meaning of a unbundling. Okay, there are three things here. One is product innovation.
Second is customer relationship management. And third is infrastructure management. Now, some of you might have, whoa, what is this? I do not know what is product innovation, what is infrastructure management and also. Don't worry. I will give you example. I will teach you with the help of example. Okay. So no need to worry if you don't know these jargons. Infrastructure. Let's take an example of uh, mobile companies. Okay. Think about mobile companies. What do the mobile companies do? Let's take example of what you know mobile companies. You have Reliance Jio, you have Vodafone, you have Airtel, anything else or what? Idea. So many mobile companies are there. Now, how these companies are operating? They have some big infrastructure with them, right? Now, those of you are from EXTC or those who are from IT and already learned wireless networks, they know what all things are there inside a mobile network, right? You have so many servers, you have BTS, you have base stations, you have antennas, you have satellites, everything is there, hardware. And then there is spectrum, which is costs thousands of crores of rupees. Okay. Then there is, with all this, you have to catch customers, customer acquisition, and there is lot of competition. You know how many players are there, right? If ye nahi acha laga to chhod ke I can go. And you have number portability also. So if you lose, customer virtually has nothing to lose if they change the service provider. You know how difficult it is to be a mobile service provider, right? So you have to maintain customer relationship also. That जो existing customer है वो छोड़ के ना जाए. इनफैक्ट वो दूसरों के भी थोड़े पकड़ के इधर लाए. रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन. एक बार कस्टमर एक्विजिशन हो गया, आ गया कस्टमर, उसको पकड़ के रखा. कस्टमर रिलेशनशिप, हाय हेलो हाउ आर यू, एवरी नाउ एंड देन स्पैम देम विद दिस ये ऑफर वो ऑफर, दिवाली धमाका करके. थर्ड थिंग इज व्हाट? अपसेलिंग. वो है एक प्लान लेके बैठा है कब से, वो इनफ है तुम्हारे लिए? नहीं, उसको और कुछ बेचो और कुछ बेचो और कुछ बेचो. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? विद प्रोडक्ट इनोवेशन. क्या मोबाइल कंपनी सिर्फ वॉइस कॉल बेचते हैं तुम्हें? नहीं. दे गिव यू डेटा, दे गिव यू कंटेंट. ऊपर से जियो A1499 का प्लान ले लो, उसके साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम मिलेगी. व्हाट आर दे गिविंग यू? दे आर गिविंग यू कंटेंट. ये देखो और बिल भरो, ये देखो और बिल भरो. कितने पार्ट हुए ये बिजनेस के? 3 पार्ट हुए. इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब सैटेलाइट और सर्वर और जंतर मंतर. फिर कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर्स को पकड़ के रखा. थर्ड थिंग प्रोडक्ट इनोवेशन, कंटेंट दे दो दे दो दे दो, राइट? तो ये 3 पार्ट हुए. तुम्हें लगता है एक वन कंपनी को इट्स टू मच वर्क फॉर वन कंपनी टू मेंटेन ऑल दैट स्टफ? सो व्हाट दे डू इज दे डू अनबंडलिंग. ये तीनों पार्ट अलग कर दो, चाहे आउटसोर्स कर दो. ये नेटवर्क वाला हार्डवेयर वाला पार्ट है, वो नेटवर्क प्रोवाइडर को ही दे दो पूरा. जैसे सीमेंस है या कोई अल्काटेल है, ये सारे जो लोग हैं ना, वो जो इक्विपमेंट बेचते हैं उनको ही दे दो, आप लोग ही संभालो करके. Then where are they focusing nowadays? Previously, network quality, is it getting too heavy for you? No, na? So this, ये जो network और quality वाला part है, initially they focused on this. All telcos focused on this part. Nowadays they don't. They are focusing mainly on customer relationship and providing content. अभी कोई बोलेगा नहीं हमारा नेटवर्क क्वालिटी ऐसा है, wherever we go our network follows. They will tell you हम ये ले लो, आपको ये मिलेगा, ये चैनल फ्री मिलेगा, ये ऐप मिलेगा. All these things they do, right? So this is innovation. This is what I was talking about. Even giants have to do that. वो लोग भी अपना एक चीज पकड़ के नहीं बैठते. तो ये जो चीज है ना, you will observe it. Now I'm just giving you the tools. Take these tools and find out और कौन से businesses में होता है और कौन सी company ये करती है, right? So you will able to understand these nuances of businesses. So unbundling business model is one pattern you will observe many places. I gave you one example of telco. You go explore further and find out other things. Okay. Second is the long tail. What is the long tail? A business which is selling
some best selling products, but only 20%, 20-80 का रूल पता है क्या? 20% बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमेशा चलते हैं, फुल टाइम चलते हैं, बहुत लोग बाय करते हैं। 80% ऐसे प्रोडक्ट्स एकदम बहुत ही कम लोग बाय करते हैं, उसका ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत नहीं, बट इट गिव्स यू वैरायटी, एक्सटेंसिव। एग्जांपल अमेज़न का कुछ प्रोडक्ट्स है वो हमेशा चलते हैं, बेस्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोन, लोग फोन लेते हैं अमेज़न पे, ग्रोसरीज लेते हैं अमेज़न पे, ये हमेशा चलने वाले आइटम्स है, उसका इन्वेंटरी बहुत बड़ा रखते हैं वो लोग। जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, मिल गया। 20% बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। एंड उसके बाद कुछ भी आप अंडर द सन कुछ भी सर्च करो, कोई भी अजीब अजीब से प्रोडक्ट भी रहते हैं, और हम लोग सरप्राइज होते हैं कि ये लेता कौन है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फिर भी होता है वो उसमें। एंड व्हाट दे से, एनीथिंग अंडर द सन इट्स अवेलेबल ऑन अम्मा जान की दुकान, राइट? दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टेल। तो तुम सोचोगे कि ये फंडा क्या है, फिर ये ऐसा लंबा टेल रखने की पूछ की जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि जिसको प्रोबेबिलिटी आता है उसको ये भी पता होगा कि ये जो लॉन्ग टेल वाला पार्ट है ना, उसका एवरेज कभी कभी ये बड़े वाले के सिमिलर ही हो जाता है। देयर इज लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स हियर, वी विल नॉट गो इन डिटेल, है पहले किसी ने वो सर्च किया है, किसी ने समझा है और यूज किया है बिजनेस में। ओके, तो ये जो लॉन्ग टेल है, आई विल जस्ट टेल यू, इट्स नथिंग बट अ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो 80% जो प्रोडक्ट्स है जो बहुत कम बेचते हैं, बहुत, लेकिन उसका जो पूरे 80% पार्ट का एवरेज जो है सेल्स, वो कभी कभी ये 20 वाले सेल के भी बराबर हो जाता है। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग द लॉन्ग टेल। ओके, एंड द एग्जांपल इज Amazon, and there may be some others, you explore it further, kahin kahin pe use होता है। Then we have multi-sided platforms. So let's move further quickly. I hope I have made the unbundling thing and long tail thing very clear to you. Next, come to the multi-sided platform. Multi-sided platform means you have two different customer segments and all you are doing is bringing them together in one platform. OLX, Uber, what are they bringing together? Uber is bringing the riders, the travelers, and the drivers together, the car owners together. ओयो बोल सकते हैं, ओयो रूम्स, होटल, आई मीन द रूम्स ओनर्स एंड ट्रैवलर्स, ब्रिंगिंग देम टुगेदर। सो इन लोगों का बिजनेस क्या है? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया उन लोगों ने। उन्होंने क्या रूम्स, होटल्स रूम्स खरीदे? नहीं। क्या उबर ने टैक्सीज खरीदी? नहीं, कुछ भी नहीं किया। दे जस्ट सेट वन प्लेटफॉर्म एंड दे आर ब्रिंगिंग टू पार्टीज टुगेदर। So उनके कस्टमर दो साइडेड के हैं, दे हैव टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, वन इज द ड्राइवर्स एंड वन इज द ट्रैवलर्स, एंड दे आर डूइंग इज ब्रिंगिंग इट टुगेदर। और थोड़ा बहुत कस्टमर रिलेशनशिप, कोई कंप्लेंट्स आया तो कस्टमर केयर या वो सब, बस उनका बिजनेस हो गया और चल गया, राइट? So these are called as multi-sided platforms. So these are the two examples I have given you. There are many such examples you can find out. Okay. Next we come to फ्रीमियम। फ्रीमियम सबको ही पता है बहुत अच्छे से। स्पॉटिफाई सुनते हैं सब लोग, स्पॉटिफाई सुनते हैं, 10 बार क्या सुनाते हैं? प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, है ना? मतलब फोकट में गाना भी सुनाएंगे, लेकिन ये भी प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, राइट? तो उनका बिजनेस क्या है? क्योंकि एक कस्टमर, एज अ कस्टमर मेरे लिए सबसे अट्रैक्टिव क्या चीज हो सकती है? कुछ तो फ्री मिल रहा है, राइट? So that is very attractive value proposition for me, getting something for free, right? So ये जो customer का thinking है, why not to encash on that, give something for free? लेकिन ऐसे चलेगा तो business, how the business will make money? The whole objective is business model is to make money, right? How you are making money then? You are making money through some premium products. Oh, premium products के कभी-कभी prices थोड़े high होते, right? So those who are buying that premium, they are actually paying for the non-paying customers. So this type of business is called a freemium. This type of business model is called as the freemium. I gave you one example of Spotify. Open business model is all about collaborating. So जैसे अब देखा जाए तो आजकल कौन सा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब
जहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी एंड द पूरे दुनिया उनको ऐसे देख रही है. दोज आर फार्मा बिजनेसेस, वो वैक्सीन वाले जो लोग हैं उनको people are just looking at them as saviors, right? So इनमें से कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, अभी उन लोग को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आया. डू यू थिंक अभी नाउ दे हैव टू टाइम टू सिट बैक एंड डू रिसर्च, लंबा लंबा रिसर्च चलेगा 2 साल 3 साल? नहीं, अभी उन लोग को झटपट डेवलप कुछ करके बिजनेस में लाना है. तो यहाँ पे ऐसे होता है कि they might come across some product which is already invented by someone else who's not a part of their business, और उनके पास वो पेटेंट है. मतलब मैं भी हो सकती हूँ ना, और कोई भी छोटा कंपनी हो सकता है कि जिसने कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, बट प्रोबेबली दैट टाइम दे डोंट नो इट इज बहुत बड़ा, और दे डोंट हैव द मीन्स टू लॉन्च दैट इतना बड़ा. सो दे वो क्या करे, इन्वेंट करके पेटेंट लेके खाली बैठे हैं. तो जैसे इन लोग को पता चलता है कि ओके व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप is already invented by someone and the patent is with them, so these giants will approach these companies and बोलेंगे ठीक है, you have patent, you quote name the price and transfer the technology to us, give your sell off your. so इसमें विन विन सिचुएशन है. इनके पास मीन्स नहीं है वो मार्केटिंग करने का, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल फिशेस. ये बिग फिशेस है, उनके पास पैसा है, दे कैन बाय इट एंड मार्केट इट, राइट? So this is called as open business model. Being open to others. Okay, आपने डेवलप किया, हम आपको, you name the price, I will give it to you. We take it, brand it, and sell it. That is called as the open business model, right? So these are the 5 patterns. शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, but I have just listed down here 5 different patterns of business models. You will see most of the time with successful enterprises.